Hello everyone, my name is Aman and this video about Jean Piaget's theory of cognitive development is brought to you by PsychLogic. So, Jean Piaget's theory of cognitive development will be revolving around schemas, accommodation, assimilation, etc. So, before we move on to the actual topic, let us first understand what Jean Piaget has to say about development. Piaget believed that real learning takes place when new experiences are being assimilated into pre-existing schemas, or when pre-existing schemas are being accommodated to fit that new experience. So let's understand this first. Think of a schema as a mental framework or pattern that helps you recognize and understand the world. It is like a mental file or folder. एग्जाम्पल के लिए मुझे करेले की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद। फिर एक बार क्या होता है कि मैंने करेले की एक नई डिश ट्राई की। इट वॉज बेस्ड ऑन एंटायरली अ न्यू रेसिपी एंड इट वॉज डिलीशियस एंड देन आई रियलाइज कि करेले की सब्जी इतनी भी बुरी नहीं होती है। सो आई हैड अ स्कीमा कि करेला गंदा होता है, बट आई हैड अ न्यू एक्सपीरियंस दैट आई ट्राइड अ न्यू रेसिपी एंड देन आई गॉट टू रियलाइज कि करेले की सब्जी उतनी बुरी नहीं होती है। ये तीनों चीजों को और अच्छे से समझने के लिए यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट आउट। चलो अब एक और अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके ब्रेन में एक बड़ी सी लाइब्रेरी है। आपकी लाइब्रेरी में एक सेक्शन है बर्ड्स का। सो यू हैव अ स्कीमा फॉर बर्ड्स दैट इंक्लूड्स द आइडिया दैट दे हैव फेदर्स एंड दे फ्लाई। नाउ सपोज you saw a penguin for the first time, which doesn't fly obviously. So you might try to fit into your bird schema. Bird वाले सेक्शन में penguin को ऐड करने की कोशिश करोगे, बट आपका स्कीमा क्या कहता है? आपका स्कीमा कहता है कि birds के पास feathers होते हैं और वो उड़ते हैं, but you still try to fit that bird into the category of birds, into the section of birds. Now this is what you call assimilation. आप अगर assimilation का literal meaning देखोगे, that itself says putting into a set of categories. Now let's suppose again you saw another bird that doesn't fly, for example ostrich. So you might think that okay, now this is the time to make another category of birds, flightless birds who doesn't fly. Now that is what you call accommodation. In other words, accommodation happens when you cannot fit new information into your existing schema. Basically, कोई चीज अगर आपके schema को contradict करती है, आप उस schema को change करोगे। जैसे birds वाले schema में you thought all birds fly, they make nests, they lay eggs. तो assimilation हम कहेंगे जब आपने उसमें कुछ editing की। For example, आपने सोचा कि all birds fly except penguin. But then you saw another bird, that is ostrich. Even it doesn't fly. So अब क्या किया आपने? अपने entire schema को change किया कि no, I was wrong. All birds don't fly. There is another category of birds that are flightless birds. Now that we have talked about basic terminologies, let's understand the Jean Piaget's theory of cognitive development. Now the theory has 4 stages: sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, and formal operational stage. Sensory motor stage occurs from birth to 2 years of age. So the stage 1 is all about reflexes. You see how child is born with a rooting reflex. Rooting reflex means those kind of reflexes that are innate and you need not learn them in order to survive. For example, sucking reflexes. जो सारे रिफ्लेक्सेस हमारे अंदर पहले से ही प्रेजेंट होते हैं उसे हम रूटिंग रिफ्लेक्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा रोता है, क्यों? क्योंकि उसे भूख लगी है। तो क्या उसे रोना सीखना पड़ा? नहीं, ये एक रूटिंग रिफ्लेक्स है। ऐसे ही होता है सर्कुलर रिएक्शंस। सर्कुलर रिएक्शंस आर रिपीटेड एक्ट्स दैट आर नॉट इंटेंडेड टू अकम्प्लिश अ गोल। देखो, सर्कुलर का मतलब होता है रिपीटेड। सो कोई भी ऐसा काम जो रिपीटेडली हो रहा हो उसे हम सर्कुलर रिएक्शंस कहते हैं। बट सर्कुलर रिएक्शंस के भी कुछ कैटेगरीज होते हैं, जैसे प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन एंड टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शंस। व्हेन अ किड इज एट अबाउट 1 to 4 months, he may start to clap his hand when he is happy. So that is called primary circular reaction. Primary circular reaction में कोई और चीज इन्वॉल्व नहीं थी. He is doing something with his body. He is moving his hands, he is moving his legs, he is clapping. So all that comes under primary circular reactions. Then comes secondary circular reaction. When child repeats the same action with an object such as a toy without an intended goal. अभी भी इसके कोई गोल नहीं होता, बट ये वही सेम रिपीटेड एक्शन एक टॉय के साथ कर रहा होता है. So that is secondary circular reaction. Moving forward with
tertiary circular reactions. Now, tertiary circular reactions are when a child can reverse what he accomplished prior. For example, imagine that Jack is building a sandcastle and now he decides to put all sand back into the bucket. So he did a creation and then he destroyed it in order to make another creation. So that is an example of tertiary circular reaction. In this first stage itself, we can talk about object permanence. अब इसको ऐसे समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है, हमने उसके सामने से उसका एक फेवरेट टॉय ले लिया और उसको एक पिलो के नीचे रख दिया. तो द क्वेश्चन हियर इज, क्या उस बच्चे को पता है कि उस पिलो के नीचे उसका फेवरेट टॉय रखा हुआ है? नॉट अंटिल द ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप्ड. सेंसरी मोटर स्टेज जैसे ही एंड होने वाला होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है. नाउ दैट द ऑब्जेक्ट परमानेंस इज डेवलप्ड, अ चाइल्ड नोज कि इफ somebody have hidden his or her favorite toy from him, it is right below that pillow. But अगर object permanence develop नहीं हुआ है तो वो out of sight, out of mind वाला फंडा फॉलो करते हैं. मतलब अगर उन्हें नहीं दिख रहा है वो, तो वो exist ही नहीं करती उनके लिए. Moving forward with second stage, that is pre-operational stage. So in pre-operational stage, children are often faced with animism, artificialism, and transductive reasoning. So what are they? You must have often witnessed these kind of behaviors in children who are 2 to 7 years old. कि अरे आपको तो टेबल से चोट लग गई, टेबल गंदा है, टेबल को मारो. या फिर a child might say that मैं टेबल से गुस्सा हूँ because टेबल ने मुझे चोट लगा दी. So this is called animism. They tend to believe that sometimes objects can also have human-like emotions. After that, artificialism. Artificialism means they are making up something. उन्हें ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट्स उनके आसपास है, उनके पास एक इंटेंशन है. अगर वो कोई भी बिहेवियर शो करते हैं कि उसके पीछे एक इमोशन होता है. फॉर एग्जाम्पल कि ये कुकर ने मुझे देखकर सीटी मारी, लाइक द कुकर इज व्हिस्टलिंग एट मी. तो दिस इज आर्टिफिशियलिज्म. नाउ सपोज कि अगर एक बच्चा उसको रीजन आउट करता है, इफ ही इज गिविंग इट अ रीजन, ही इज रिलेटिंग इट टू समथिंग एल्स. फॉर एग्जाम्पल कि कुकर ने मुझे देखकर सीटी इसलिए मारी बिकॉज आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, आज मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ. सो दैट इज transductive reasoning, that the cooker started whistling because I look good today. In this stage, it is often seen children asking a lot of questions कि ऐसा क्यों हुआ, वो वैसा क्यों हुआ, ये क्यों होता है. बहुत curiosity होती है उनके अंदर. और एक और चीज, the children that are between 2 to 7 years old are often seen as egocentric. They have this egocentric personality. Children in pre-operational stage also have trouble distinguishing between the quantity and appearance, and this is one of the biggest difference between pre-operational and concrete operational stage that we are going to look forward. यहाँ पर क्वांटिटी और अपीयरेंस से मेरा मतलब ये है कि जो चीज़ें हमें बड़ी दिखती है, ज़रूरी नहीं कि उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें हो. फॉर एग्जांपल, आप इन दोनों जार्स को देखिए. ये हम काफ़ी अच्छे से आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों जार्स में कैंडीज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी में है. लेकिन जो बच्चे प्री ऑपरेशनल और सेंसरी ऑपरेशन स्टेज में है, उन्हें लगेगा कि जार बी में ज़्यादा कैंडीज है. Now, we as grown-ups, we know it very well कि ज़रूरी नहीं कि जिसमें हमें कैंडी बहुत ज़्यादा दिख रही है उसमें ज़्यादा कैंडीज एक्चुअल में हो सकता है दोनों में कैंडीज बराबर ही हो. We do have the ability to distinguish between quantity and appearance. Now, the next is concrete operational stage, which starts from 7 till the age of 11 years. यहाँ पर धीरे धीरे बच्चों की अब abilities develop हो रही है. How so? Now, जैसे कि हमने प्रीवियस स्टेज में देखा कि चिल्ड्रन वर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अपीयरेंस एंड क्वांटिटी, बट यहाँ पर बच्चे एक ऑब्जेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स, साइज, शेप और कलर को देखकर ये चीज बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. इस पर्टिकुलर एज में, इस पर्टिकुलर स्टेज में ये एबिलिटी उनके अंदर डेवलप हो गई होती है. चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ऑल्सो नो व्हाट्स कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी. इट मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट दैट्स मे बी ब्रोकन or hurt can actually be fixed and returned back to its original state. In this example, a car that gets in the crash can be fixed and returned back to how it was before. So coming to the last and the final stage, that is formal operational stage. It begins from 11 years and continue throughout the lifespan. Here, the children are able to do deductive reasoning and abstract thinking. For example, children might think that if I do this, this will happen. If I do that, that will happen.
They might use their past experiences to make decisions. Like उन्हें पता है अगर वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, वो अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, तो हो सकता है कि पेरेंट्स उन्हें नई बाइसिकल ला के दे. The ability of metacognition is also a thing that will be developed in this particular stage. Metacognition means the ability to think that we are thinking in a certain way. And how do we change our patterns of thinking? जैसे आपने कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में सुना होगा. कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी मेटाकॉग्निशन का एक बहुत बड़ा रोल होता है. वो हम आने वाले वीडियोस में डिटेल में देखेंगे. सो आई होप आई वाज एबल टू मेक माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर. एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल अस एट ourpsychologic@gmail.com. You can also join our WhatsApp channel, Telegram channel to know further updates about Psychologic, various government notifications, competitive exams notifications, fun facts, and all the information about complementary lecture notes. So that's all for today's video. Stay tuned. Bye-bye. See ya.